matter different value. But to matter to setting. Candidate का primary to teacher. फिर जब उनको अपने बातों का परीक्षा दी थी, that is like a one. उस समय इनसे कहा गया था कि आपकी एज और आप इस एग्जाम में बैठ सकते। Neither P or not. Here is the P2. Cost and loss. नवीन आवेदन करने वाले व्यक्तियों की इनकम आई जनवरी 2021 को 18 होनी चाहिए। नर्सिंग उसके बाद उन्होंने निर्देशिका जारी की नर्सिंग कैंप परीक्षा के लिए 2022 निर्देशिका इंस्ट्रक्शन बताएं। Let's just repeat that. You are allowed to participate in counseling. क्या हुआ in counseling? How can you change the rules midway? We have not changed the rules because the rules are of 2018. Where are those Section R1 the relevant recruitment rules? as part of the relevant section R1 which was applied, madam, kindly see the rules are the MP to the education service teaching guidance service conditions and recruitment rules 2018. Now the schedule 3 thereof categorically is 58. Minimum age is 21 years. So he is mixing the eligibility test with the selection process, with the recruitment test. Recruitment process. Eligibility test is entirely different. The rules is Where is the annexure? R1. R1. In fact, a comprehensive reply is there in the, where if the wiries has been challenged. Where does it talk about minimum age? Because in this case, the wiries are not challenged. In the subsequent case, if I not kindly take up there, a detailed reply because the wiries of that particular rule and the schedule has been challenged. No, the recruitment rules are before us. Where is the provision for the minimum age? Next, minimum age 21. Age bill. That is page number 9, my lord. प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक के लिए सभी के लिए है, मैं इसलिए दूसरे केस में क्या आपने रूल्स पूरे नहीं लगाए? पार्ट में लगाए? क्या आधे अधूरे लगाएंगे क्या? ये आपने क्यों आधे अधूरे रूल लगाए? फर्स्ट पेज लगाया, उसके बाद डायरेक्टली कम टू द रेलेवेंट शेड्यूल। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव अपना फाइल किया है, उसमें पूरा रूल्स लगाया है। मैं फाइल सी the next case for reply relevant material. So main reply is given 5.7.5. 8.5. 8.5 का main reply है. पूरा lecture 8.5 is WP. That is WP number 2852. 8.5. That is the main. We have adopted the reply file there and submitted. The entire group has been filed there. And the teacher himself has filed the rules because he's telling the violence of his rule. The relevant rule is rule 8. 8 of that is section P1. Rule 8 says that the candidate must have attained the age as specified in column 3 of schedule 3. P1. P1, page 27. Yes. It says that the candidate must have attained the age as specified in column 3 of schedule 3. नहीं, 27 तो हिंदी में है।
पेज है वो वाला करेक्ट पेज पे हिंदी में देख लेना 18 नंबर पेज है। लिखा है कि अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम 3 में यथा विनिर्देश आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु उस अनुसूची के कॉलम 4 यथा विनिर्देश आयु पूरी न की। मिनिमम एज क्या है? ये बात करते हैं अनुसूची 3 के कॉलम 3 में। अब मान लो खाली कर दो अनुसूची 3 का कॉलम 3 दैट इज Minimum age is given in column 3. in of schedule 3 that is on page number 31. Yes. सभी कॉलम पे चाहे वो कुछ बाद में स्टेटमेंट हो चाहे बाद में हो चाहे ड्राफ्ट में सबके लिए 21 और एलिजिबिलिटी टेस्ट में हमने 18 इसलिए किया था, हमने उसका रैशनल भी लिखा है कैबिनेट ने डिसीजन लिया था क्योंकि कंपैरेटिव अपॉइंटमेंट के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं काइंडली सी का देता हूं गिवन द रीजन टू जस्टिफाई व्हाई एलिजिबिलिटी टेस्ट द रूल से दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट separately the Oh, this is for which post? It is for primary traffic. इसमें कहाँ है वो? कॉलम 3 में प्राइमरी टीचर कहाँ है? नंबर 3 पे। सबके लिए सेम है। Will be 21 years. इसमें tax को साहब ने फिनिश कर दिया at the time of selection process, not at the time of परीक्षा में। लॉजिक ये रहा जजमेंट में नॉट डेवलपमेंट हुआ है और ऑनरेबल बेंच इन्होंने केस जो माना है कैलकुलेशन की 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट करने की काम निर्देशिका की एज को नहीं माना, सिलेक्शन प्रोसेस अनाउंस होने के बाद ही आने वाली जनवरी को माना। तो साहब ने नहीं बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस के बाद की डेट को काउंट किया जाता है। वो इसी में लिखा हुआ है रूल में। Yes. देखो Let us come to that rule 8. और तो पास किया लॉजिक किस ऑर्डर को उन्होंने निर्देशिका जारी की थी और निर्देशिका के अवधि के जस्ट मिनट, रूल 8 में आइए, रूल 8 में आइए। या तो ये पहले बोलिए या तो बहस मत शुरू करें। Now it is too late. क्लॉज 1 सब क्लॉज अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम 3 सब क्लॉज 3 में यथा निर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम 4 यथा आयु पूरी न की। बट सिलेक्शन प्रोसेस अनाउंस होने के बाद और कब हुआ है? एडवर्टाइजमेंट कब का है? एडवर्टाइजमेंट पात्रता परीक्षा 2021 में अनाउंस। डेट बताइए। डेट नोटिस में है हमने जो पात्रता परीक्षा का तो उस समय कोरोना चल रहा नोटिस में 2021 पर पाया 2021 में एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या है? एडवर्टाइजमेंट को डेट नोटिस इसमें उन्होंने डेट को 2022 लिखा तो आवेदन पढ़ने की तिथि 14/12/2021। एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश हुआ है? इसका एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ वो आप क्यों कहने को आप डेट बताइए ना, जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। 14/12/2021 मतलब 12/21 जी ये एडवर्टाइजमेंट की डेट है या लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म? परीक्षा के लास्ट डेट की सबमिट 2 जनवरी 2022 अपना के साथ परीक्षा दिनांक की राशि 5/3/2022। एडवर्टाइजमेंट की डेट 14/12/21 है। एडवर्टाइजमेंट की डेट मैं बताता हूँ 8.12 में मैं क्लियर बता रहा हूँ 8.12 में बता देता हूँ कि संयुक्त परीक्षा 2020
और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 14/12/2021। ये अलग अलग डेट्स क्यों बता रहे हैं आप लोग दो तो उससे भी हमने जो सर्कुलर लगाया है 8.12 में आप देखेंगे आखिर 8.12 है मेरा WC नंबर, उससे हमने रजिस्टर लगाया है। तो उसमें 2020 है, फॉर्म भरने की डेट 2021 लास्ट है, और ये जुलाई 2018 का बता रहे हैं 21 पर, फिर जुलाई 2019 में इन्होंने 18 से 40 बढ़ प्राथमिक परीक्षा के लिए अनेक्चर P4 8.12 देख रहा है, क्लियर हो जाए। चयन प्रक्रिया का प्रारंभ कब माना जाता है? 2020 ये आया है। कब माना जाता है एज पर लॉ? एडवर्टाइजमेंट ये पात्रता परीक्षा वो स्टार्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाएगा या ये एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा? एक बार पात्रता परीक्षा पास करने उसका जब भी चयन परीक्षा है उसमें बैठ सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज 14/12/21। रिक्रूटमेंट की पात्रता परीक्षा के हाँ भरने की डेट बन रही है। पात्रता परीक्षा लेकिन फिर पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा दोनों एक समय एक साथ ही प्रसिद्ध क्रोनोलॉजी स्कूल ऑफ इसमें 2021 दिसंबर में आवेदन फॉर्म भरवाया, मार्च 2022 में इन्होंने एग्जाम लिया। The law is respect not the issue. The issue is the only thing that in the eligibility test, the age minimum age is 18 years, whereas in the selection test, the minimum age is 25 years. So, despite clearing the eligibility test, they are not able to participate. We have clarified that in most of the cases, they are not challenging the values of the rules. They are only challenging the some executive instructions or the RP. The rules clearly stipulate until unless they could not challenge the values of the rules. They are not talking about whether it should be 2021 or 2022 or some other year. The issue is not what they are now arguing or the judgment which they are not using. The issue is whether in eligibility test after prescribing 18 years as the minimum age, whether in the selection test 21 years is justified or not. This is the only 18 is for the eligibility test. it is for eligibility test. And the reasons we have furnished in our reply why it is. Because it's an eligibility test and has nothing to do with the selection form. एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अलग से कोई रूल्स है? इसी रूट पे हमने प्रिस्क्राइब किया है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा by executive instructions what would be the age. That has been prescribed by executive No, we instruction. have prescribed. That is what they have challenged by law. That is 18. That is 80. And the reason we have given the reason as to why we have fixed it. Initially, it was 21 years, even for eligibility test. But there was a round of litigation before this honorable court. There were certain persons who, after in professional appointment by not normally समझा खरा शिक्षक के पद पर उनको नियुक्ति के लिए पात्रता होगी तभी उनका केस कंसिडर किया जाएगा. Therefore, we have made them eligible. Because For eligibility test, appearing in eligibility test, there is the minimum age is 18, and for participating in the recruitment, that is 21. So this challenge that they have made is to what? in some petitions, only the executive instruction prescribing the age as 18 years is under challenge. Or some other, in fact, instruction is dated in the first. They say that it should be 18, not 21. 22, the executive instruction, which they are challenging, that is an option P3. In number 46 is these are the directives for the purpose of counseling
It prescribes 21 years. So that is in accordance with the rules, statutory rules, where under 309. No, they have challenged that particular. There is a Nirdeshika directives, in fact, figures for the counseling. No, they are challenging the rule, 8 and schedule In the 3. first petition, they are not changing the rules. In second petition, they are. In various. No, we are talking about Shalini Shukla's case. In Shalini Shukla, they are changing. We have filed a reply. We have justified the well, both. NCT, it is in consonance with the norms prescribed by the regulations of the NCT as well. And for the 18 years as well, we have ascribed the reasons for not kindly see in my reply. What is the educational qualification necessary minimum for participating in the eligibility test? Where is that rule? Because there is no document verification or not, the eligibility test. Therefore, one not normally there is a qualification prescribed. It is the same as it is for selection. But there is no document No, verification. selection prescribes for a graduation degree. But no, I don't think it's graduation. 12th class pass. For primary. For Well, primary is 12 and diploma of 2 years. Then I have mentioned in the reply. My lord, para 7 of my reply I have stated. Notification dated 29/7/2011 issued by the National Council for Teacher Education, laying down a minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher. Exercise of power under section 23 of the RTE Act, published in the Gazette in 2011, Section R4. There, the rule of notification clearly should be appointment on the post of a primary teacher, teaching classes 1 to 5. The minimum qualification was Inter India passing senior secondary, as well as a 2-year diploma in elementary education. Then they have given the reason in para 8. During the deliberation on the issue, the department also considered that normally Answer. Yes. मतलब और है and है दोनों होना चाहिए थोड़ा Why is there a different minimum age for participating in the eligibility and we have given the reason for that, my lord. And to come to our reply. Yes. Yes, stated. So, if I may just be permitted to read. The first contention of the petition is that clause 10 of the primary school teacher eligibility test rule stipulates that the minimum age to eligible to participate in the teacher eligibility test can be 18 years as on 1/1/22, and that for actual recruitment, the same shall be as prescribed by the service recruitment rules and the GIT circular. However, contrary to the said clause, in disregard to the GIT circular, the minimum age of 21 years has been prescribed in the Intune executive order. Then, fine. Firstly, the answering respondents hereby produce on record the original advertisement rulebook issued by the primary school teacher eligibility test. Second, in accordance with Rule 8, the Red Book Schedule 3 of the Rules of 2018, it was clearly stipulated in Clause 10 that the minimum age for participating in the said eligibility test shall be 21 years, as on 1/1/20. However, contrary to the aforesaid publication, various representations were made to the department as well as WPs were filed before this order, challenging the said age limit of 21 years.
A copy of the relevant acceptable note sheet was to the education department, wherein substance of certain representations of the candidate have been reproduced. R2. Their perusal clearly shows that most of the representations were of those candidates who were seeking compassionate appointment against the post of Pramanic Shiksha, but by virtue of being less than 21 years of age, could not participate in the teacher eligibility test. A copy of various orders are R3. Hence, by addressing the said issue, the department analyzed the notification dated 29/7/11 issued by the NCT based on the minimum qualification, which I just read out, my lord, of senior secondary plus 2 years. During the deliberation of the issue, the department also considered normally a student passes senior secondary 10 plus 2 at the age of 17 to 18 years, and thereafter by the time he completes 2 years diploma in elementary education, he would be at least 19 to 20 years old. As evident from the relevant expectable departmental note sheet. Hence, finally, a decision was taken by the highest authority of the department, amend clause 10 of HR 2 by lowering the minimum age of 18 years for the purpose of participating in the eligibility test, but maintaining the same minimum age as prescribed in the departmental recruitment rules and the jury circulars issued from time to time. So, my lord, it is a case where not where the selection age was enhanced. It is a case where eligibility test age was reduced because of certain circumstances and genuine reasons, my lord. And it was done by following the prescribed, by following the due procedure. There's because of that they have now cleared the eligibility test, but they are not getting appointment because it is 21 years. The rule prescribed 21 years. My lord. They are all below 21. I know. Below 21. That is why they are before. So any challenge to this in the court? Any challenge to this in the court? Is there any challenge to this in the court? Lowering of the age of 18 to the Ah. of age from 21 to 18. In fact, they were even the other way around. They were saying that permit has to participate in the eligibility test. So we considered there were WPs filed, and all the WPs were disposed of once we lowered the age. All the WPs were filed on the order. So the other way around litigation was there, challenging the higher age for eligibility test. It is not the there is no challenge made to the. So now they must be all eligible. They must be because 21 के हो गए होंगे आप लोग सब. What is wrong in this reasoning given by the state? 12th class कब पास करता है आदमी? इस एज में? Alright. और 2 साल डिप्लोमा ना हो गया? 20-21 पे आ गए ना आप? What is wrong with their reasoning? उनके साथ गलती है 2020 की पात्रता 21 में फॉर्म भरा थे 2022 को रिजल्ट देते हैं निर्देश का केस में जारी करते सिलेक्शन होते 24 में होती मतलब यहाँ करना हम इसके रूल्स को चैलेंज नहीं किए हम उस निर्देशिका को चैलेंज किए हैं इस निर्देशिका में लिखा था कि एज 21 होना चाहिए निर्देशिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रूल्स हैं रूल्स से कि जब अपॉइंटमेंट्स इशू होंगे उसके बाद की पहली जनवरी को 2023 तक 2023 में इन्होंने प्लीज लॉर्डशिप से देखेंगे जून 2023 में इन्होंने अपॉइंटमेंट्स इशू किए मुस्लिम के 2023 में तो ये शुड बी कंसीडर ऑन द फर्स्ट जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर और पहली जनवरी 2024 एडवर्टाइजमेंट कब इशू हुआ है? एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ लॉर्डशिप We are not talking 2023 में We are not talking about eligibility test. We are talking about regular recruitment. ये हुआ लॉर्डशिप 2023 ये तो आपने 14, 12, 21 बताया है. पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की पात्रता परीक्षा वो सबने बता दो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा था एक बार लड़की में ऑनलाइन शुरू कर और मैंने जो लड़की ऑर्डर दिया ना टेक्निकल क्रोनोलॉजी फाइनल एडवर्टाइजमेंट कब का है? एडवर्टाइजमेंट 8.12 पे आ रहा है 8.12 एडवर्टाइजमेंट मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पात्रता परीक्षा 2020 के अंतरम में मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य शासन विद्यार्थी कार्य विभाग और प्राथमिक शाला शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 14/12/2021 8.12 में आया ये तो आप पात्रता परीक्षा की बता रहे ये पात्रता परीक्षा है फिर जिसको हमने हैं. आपको बोला जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कब इशू हुआ?
रिक्रूटमेंट के लिए पात्रता परीक्षा के बाद हुआ होगा ना? काउंसलिंग शुरू किया अभी। अब तो काउंसलिंग में पहुंच गया, लेकिन एज की वजह से हमको डिपार्टमेंट से रोक दिया गया। आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे? प्रश्न एक सिंपल प्रश्न किया गया, एडवर्टाइजमेंट की डेट बताइए। पात्रता परीक्षा से कोई मतलब नहीं उसका। कहाँ है डॉक्यूमेंट बताइए? फर्स्ट केस में बताइए, सुशील सिंह वाले। चैनल जिस मंथ ये निर्देश क्या 27/10/2022 27/10/2022 कहाँ पर है डॉक्यूमेंट बताइए? कोई तैयार नहीं है। Nobody is ready for arguments. Unnecessarily we are wasting our time. ये तो आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए who has to lead the argument. थोड़ा सा है सर, ऐसा पीछे देखना आपके केस में तो रिटर्न ही नहीं है। रिटर्न है? चिंता नहीं दे रहा हूँ। ये रिटर्न है आपके? और ठीक है, ऐसा पीछे देखना हमने इसको चैलेंज किया था। ये 27/2022 को काउंसलिंग के लिए निर्देशिका जारी कर रहा है और इन्होंने इसमें एज मांगी लॉटरी इन्होंने 2021 साल कहते हैं कि 21 साल में चाहिए वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और हम इसी को उसी वक्त इसको मैंने चैलेंज कर इस तो ठीक कह रहे हैं बिकॉज वो रिक्रूटमेंट रूल्स में है, तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था हमारे। तो ठीक है, आपका जो मैक्सिमम मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की जाएगी वो कैलकुलेट की जाएगी, वो दैट इज ऑन द 1st of January 23। 2023 में तो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था तो इस काउंट करनी चाहिए 1 जनवरी का उस समय अब कितनी ऑर्डर की मैंने ऑर्डर तो किया लॉटरी उसमें जो कॉस्ट किया है नहीं कोर्ट ने इसकी निर्देश का कॉस्ट यदि निर्देशिका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है तो केस विल बी कंसीडर्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी ऑफ 2024 बाकी देखेंगे जो रिक्रूटमेंट रूल्स पे दोबारा आइए, रिक्रूटमेंट कहाँ है एनेक्चर? लोग पढ़ने के मैंने लेकिन कभी पढ़ेगी तो बताऊंगा। ठीक है, रिव्यू सेफ्टी देखना रिव्यू सेफ्टी ये रूल या अधूरा लगी। देखिए रिव्यू सीधी भर्ती के लिए बात करती समय ये आयु की गणना करते हैं अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख के पश्चात आने वाली एक जनवरी यही चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसके पश्चात आने वाली 1 जनवरी 2023 मांगते हैं। तो ये जो 21 की डेट है ये 1 जनवरी 23 पे आनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। 24 डेज क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस उनके मार्च 2023 एडवर्टाइजमेंट 27/10/22 का है। निर्देशिका कि हम करेंगे कहाँ है? कहाँ है? पेपर में निकाला उसके बाद ये निर्देशिका जारी। एडवर्टाइजमेंट कहाँ है? In some, because this was not what they are arguing now. What should be the date of calculating the age of 25 years? Whether 1/1/23 or as set by 1/1/24. That was not the issue. Any of these. That is why we have not filed that Recruitment. Otherwise, I have. Yeah, they are arguing something different than the They are previous. arguing something which is not there at all anywhere in any of these. Where is the pleading? बताइए, in the petition. I am challenging the CP1. First case of it. Really my जब एप्लीकेशन निकलेगा उसके बाद जो 1 जनवरी आएगी कैलकुलेट किया है। नहीं बढ़िया तो रिक्रूटमेंट रूल्स है, इसमें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है।
कहाँ लिखा है आपने मीटिंग्स में? I have started. Present petition, the petitioner challenging the clause 4.3 of English order dated. The price of those are vice passed by for number 2. Which by which they change the This is subject matter in brief. This is not part of the pleadings. Pleadings में बताइए अंदर. Subject matter of brief is not part of the pleadings. आज मैं आपको Please point out the pleadings. जो आप बहस कर रहे हैं उसका. नहीं पता। नहीं, पैरा बताइए. इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमने तो केस लगाया था सिंगल केस वहां भी केस और उसमें उन्होंने क्या किया केस को कंसिडर करके सॉल्व कर वो ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर बाद में देखेंगे, पहले अपनी प्लीडिंग्स बताइए. फिर मैंने इसमें प्लीडिंग पे मैंने लैंड ऑफ उन्होंने 2019 में भी एज में 18 इयर्स तक की सभी डिपार्टमेंट की राउंड में मिला 6.1 .1 5 पैरा 5 में नहीं है कहीं. उन्होंने 18 साल दिया उन्होंने 21 साल कर दिया जलाया लेक्चर वो भी लगा उसको उन्होंने 18 इयर्स किया हुआ है पीएडी कॉलेज से and I have filed the same lawsuit. If the people in this व्यापम के द्वारा किए जाने वाले एग्जाम सीरियल 18 होने P4 में रिक्रूटमेंट रूल 21 कहता है. राइट, उस रूल को आपने चैलेंज किया है? नहीं किया. 21 ही रहेगा वो. 21 कब कैसे कैलकुलेट होगा? जिस दिन रिक्रूटमेंट शुरू होगा, दैट मींस एडवर्टाइजमेंट उसके अगले साल की 1 जनवरी, और तो अगले साल की 1 जनवरी इज 1 जनवरी 2023. एक मौका देंगे लड़की को मैं एडवर्टाइजमेंट को फाइल नहीं कराऊंगा मैं खुद निकाल के ला दूंगा लड़की को मैं 6 मार्च 2023 को इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया तो पोस्ट भी डाला है कहाँ है वो एडवर्टाइजमेंट? वो फाइल नहीं किया उसके पहले फाइल आपने ऐसा कहाँ कहा है पिटीशन में? बहुत पहले फाइल करते थे मैंने हमको एक दिया उसको पेमेंट करिए आपने क्या? तो हमने तब तक हमारे पास ऑर्डर आ गया है कौन सा ऑर्डर? जिसमें हमारे केस को सभी चीजें 0.1 को जो आपको ऑर्डर दिया लास्ट देखेंगे लास्ट में पैराग्राफ 30 in view of the aforesaid conditions and facts and circumstances of the case, this court has no basis to hold that selection process start only when the instruction was issued and not from the date of admitted dated public thereof, which only prescribes the proposed date for commencement of the selection process. In view of the same paragraph 4.3 of including instructions, which prescribe that a conclusion minimum and maximum is shall be done on the basis of 1/1/2020 hereby passed. And it is directed that petition shall be governed by the rule 8(1) of the rule rule so that which provide that the candidate must have attained the age as specified in the column 3 of petition third and must have not attained the age as specified in column 4 of the state. इसको चैलेंज किया आपने? इंडी बेंच के ऑर्डर को आपने स्टेट ने चैलेंज किया है? whether it should be 1/1/21, 22 or 23. Not the issue, and I'll see your questions in regard to that. देखिए अभी में चैलेंज हुआ है. Challenging 27/10/22. The Nirdeshika dated 27/10/22. This WP which they are now facing, WP order which they are now facing before my law, challenge is to
In fact, instructions dated 5/23, earlier issued on 26/11/22. That instructions which are before bylaws were not there before the WP code, which decided this WP bylaw. So if they have an issue as to what should the cutoff date, It's a, so not challenged, the single bench. one of the kindly see para 2 and 3, part 2 and 3 of this order says that so if they are having an issue with respect to the cutoff date, then one of the direct I will take instructions as to when the agreement was issued. That the 1st of January of the next year would be the cutoff date. That's say 21 days. But here they were raising the issue as whether it should be 18 years or it should be 21 years. That we have answered. The Learned Counsel for the petitioner have relied upon the single bench order dated 23/2/24 and passed in WP 24014/23, so and so versus so. Whereby the contentions as raised by the petitioner here have been allowed. Next, the website of the High Court does not indicate that the said single bench order has been challenged by the state. Next, however, State Council is directed to seek instructions as to whether the said order can be followed or not. The present bunch of petitions list in the last week of July. My lords. Bill number 9, 7 of the public scheme. My lord, this is a public interest litigation with respect to construction of a commercial complex in a residential colony at Bhopal, namely Arera Colony, my lords. My lords, the notices were issued in this matter way back in the month of November 2022, and on the previous occasion, in the month of January 2024, my lords, we filed an application seeking improvement of MP Electricity Board, which was also allowed. Well, there was a delay in payment of the PF, so we had filed an application seeking condonation of delay in payment of PF so that notices can be served to the respondent number, newly added party, respondent number 5. Who was raising the construction? It's respondent number 4. Order 4. Yes, they have been served with the notices. It's almost 2 years now. They have not filed the reply, my lords. Order 4. Yes. What is your justification? My lord, I'm sorry. Have they stated that they shall not be carrying out commercial activity? Your name? Aditya Khandekar. Enters appearance on behalf of respondent number 5. 4. Who is alleged in this petition to be raising construction of a commercial building in a residential colony.